coming on permutation formula. Next topic is permutation formula. Now, one thing you should keep in mind that I am not going to use this permutation formula in our word problems, because the problem is in word problems we have conditions. Formula does not imply conditions. जैसे आपने कहा repetition of digit is allowed, वो आपके फॉर्मूले में नहीं आती है. फॉर्मूला उस पार्ट को कवर नहीं करता है. It should start with 4. The word should start or the number should start with 4, or it is between 4,000 and 5,000. तो 4 को फिक्स किया, even number आया तो last को फिक्स किया. वो सारी कंडीशन हमारे फॉर्मूले में नहीं आती. This formula is only going to be used to prove certain result on the formula. वर्ड प्रॉब्लम में मैं केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करूंगा, वही आपको यूज करना है, नहीं तो गलतियां होंगी, क्योंकि सारी कंडीशंस जो हमारे पास आएंगी उन सब के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि कंडीशंस लगते ही फॉर्मूला हमारा फेल हो जाता है. दैट्स व्हाई ओनली फॉर द प्रूफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू यूज दिस. नाउ व्हाट दिस फॉर्मूला सेज, फर्स्ट we'll generate that formula and then we will do the question. If we have alphabets, 5 alphabets are there, A, B, C, D, E. If I say 3-letter word to be formed, no repetition. If I say 3-letter word to be formed, कैसे करेंगे? इस प्लेस को मैं 5 से फिल कर सकता हूँ, इसको 4 से, इसको 3 से. Sir, 60. इस रिजल्ट को अब मैं क्या लिख रहा हूं, देखो यहां तक आपने किया, इसका मैं फैक्टोरियल पूरा कर रहा हूं, तो दैट विल बी 2 into 1 और डिवाइड बाय 2 into 1. I'll write that. Then when you write this in factorial, 5 by factorial 2. What this formula says, this formula says that 5 objects are there. You have arranged, arrangement means speed. How many you have arranged? 3 at a time. 5 permutation 3. 5 permutation 3 means 5 objects were there, 3 you have arranged. So 5p3 formula will be factorial 5 by factorial 2. This you can write this way also, factorial 5 by factorial 5 minus 3. Yes, is it clear or no? By the way, Yes, sir. I want 2-letter word to be formed. 2-letter word. So then I should say 5 into 4. If you complete it factorial, it will come 3 to 1 divided by again 3 to 1. Then what the numerator is factorial 5, denominator is factorial 3. I can write this as factorial 5 by 5 minus 2. Because what you are doing, you are taking 5 and arranging 2 at a time. So from this, what you got here, 5p3, 5 objects are there, and if you are arranging 3, formula says factorial 5 by 5 minus 3. 5 object, 2 you are arranging, formula says factorial 5 by factorial 5 minus 2. Right? But in this case, repetition is not allowed, just check here. और कोई कंडीशन नहीं की, मैंने क्या कहा, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, आपने 3 को अरेंज किया या 2 को अरेंज किया, बस इससे ज्यादा आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं. इसमें अगर कंडीशन डाल दी कि वर्ड शुड स्टार्ट विद ए या ए बी कम्स टुगेदर, ये कंडीशंस आते ही ये फॉर्मूला बेकार हो जाता है. तो दैट यू शुड कीप इन माइंड. नाउ फ्रॉम दिस व्हाट फॉर्मूला यू हैव जनरेटेड, जस्ट चेक हियर. n objects are there in all. Now I'm generalizing this. n objects are there. You are arranging r at a time. So n arrangement r, n permutation r. What my formula says according to this, it says factorial n और नीचे आ रहा है factorial n minus r. n minus r. N minus r. This is the formula. Now we have npr, n objects arrangement of r. If you want, it will be npr. In some books, npr they write this way: permutation of n objects r at a time. Permutation of how many objects? N objects taken r at a time.
So permutation n objects are at a time. So p n comma r or npr, that is factorial n by factorial n minus. This is the formula now you should remember, and we will be doing questions on it. So n objects, and if you want to arrange r at a time, formula says factorial n by factorial n minus r. It is also written as p n comma r. Some book it is the result written, in some book it is written this way. So don't get confused that what is the meaning of this or what is the meaning of this. Both are the same things. It says n objects are to be arranged. It says arrangement of r objects taken n at a time. R at a time, sorry, out of n. Now write down questions on it. Now one more thing take here. One more result I told you, that is factorial 0 is 1. If you remember, I told that and I told Yes, sir. its proof I'll tell you. That also I'll tell you. इसका proof भी मैं बता देता. Again 5 letters are there and I want that 5 to be arranged. What formula says? It will be 5, 4, 3, 2 and 1. Is it your factorial 5? आपका फॉर्मूला क्या कहता था? फॉर्मूला कहता है आपका 5p5, 5 objects and 5 to be taken or 5 to be arranged. Then what this formula says? This says factorial 5 minus 5. This is the formula you have. Factorial n by n minus r, and this is coming equal to what? Factorial 5 ही था ये वैल्यू, इसके नीचे हमारा क्या था? 1 था. इसका मतलब आपने यहाँ पर 1 को factorial 0 लिखा है. Factorial 5 से factorial 5 कटेगा, factorial 0 is come out to be 1. इससे आपकी क्या कंडीशन आ रही है कि 1 की वैल्यू क्या है? Factorial 0. So I should say factorial 0 also come out to be. This is by the product formula we have taken. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से ये रिजल्ट आया. आपके इस फॉर्मूले से रिजल्ट आया फैक्टोरियल 5 by 5 minus 5. इसका मतलब 1 आपका इसके इक्वल हो गया. इसका मतलब फैक्टोरियल 0 इज क्लियरली कम आउट. तो फैक्टोरियल 1 की क्या वैल्यू होगी सर? फैक्टोरियल 1 इज आल्सो 1, फैक्टोरियल 0 इज आल्सो 1. दोनों आपके 1 होंगे. फैक्टोरियल 0 इज एन एक्सेप्शन, वो आपको याद रखना है, 1 होगा. फैक्टोरियल 1 भी आपका 1 होगा. नेगेटिव में फैक्टोरियल नहीं आएगा. ये नहीं कि फैक्टोरियल ऑफ -1 आप कहें या फैक्टोरियल ऑफ -2, वो नहीं होता है. केवल आप सर एक बार आप वेरिएबल लेकर के एक्सप्लेन कर सकते हो क्या सर? ये तो अगर जैसे npn आ जाए यहाँ पर, वो वाली चीज सर. तो करो, देखिए क्या करोगे. npn, n objects are there, 1 2 3 4 till n objects. How many ways you arrange it? पहला वाला n ऑब्जेक्ट n वे से, फिर n-1 वे से, फिर n-2 वे से. लास्ट क्या आएगा? 1 n-2. ये n-2 और लास्ट क्या आएगा? 1 आएगा. यस सर. यस सर. फैक्टोरियल n. फैक्टोरियल n. Yes sir. 1, it was npn here. फॉर्मूला क्या कहता है? फैक्टोरियल n by फैक्टोरियल n-n. Factorial 0 is also. Okay sir. Okay. Next question, write down please. Evaluate 15p3. My question is evaluate its value. 15p3. Evaluate 15p3. Out of 15, 3 to 15 into 14 into 13. We will write this as factorial 15 into 14, 13. Factorial 15 minus 3. Right or no? Then it will come factorial 15 by factorial 12. ये छोटा है, ये बड़ा है. What I should do? 15 into 14 into 13. It is factorial 12.
and here also factorial 12. This part get cancel out. You got the answer 15 into 14 into 30. 2730. 2730. 2730 is the answer. Yes. Next question, please. 2 times 5p3 equal to np4. My question is, what should be n here? What should be n here? 2 times 5p3 is equal to np4. Find what should be the value of p. Sorry, n. So 5. First two So remaining. 5. Yes. Factorial 5 by this will come out to be 5 minus 3. Here I get it factorial n by factorial n minus 4. Then I get it 2 times factorial 5 by factorial 2. Here it will come factorial n by factorial n minus 4. This is 5, this is 2. So this is smaller, we should open it. 5, Sir? 3, factorial 2. By factorial 2. Here n is greater, n minus 4 is smaller, so we should go n minus 1, n minus 2, n minus 3 factorial, n minus 4 divided by factorial n minus 4. These two gone, these two gone. So we can also directly cancel 2 and factorial 2, right? Sir. हाँ कैंसिल कर दो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, कैलकुलेशन तो पूरी करनी पड़ेगी. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 4. यहाँ भी 4 नंबर होने चाहिए. इट इज द ग्रेटेस्ट वन, इट इज द स्मॉलेस्ट वन. तो क्या लिखा जाएगा? 5, 4, 3, 2. And here it is n minus 1, n minus 2, n minus 3. Then clearly what is n coming now? N is coming 5. Sir? हाँ जी. Can we do it like that कि factorial n is equal to factorial 5 so n is equal to 5? ऐसी होती है क्या कोई condition? हाँ बिल्कुल होती है, बट ये आ कहाँ रही है? क्योंकि सर 2 और factorial 2 तो कट जाएगा. ठीक है, फिर इसका न्यूमरेटर को इसका क्या करोगे? सर जैसे अपन नीचे फैक्टोरियल 1 होगा ना. जैसे डिनोमिनेटर को उसमें करा था कि फैक्टोरियल 0 is equals to 1. ऐसे नहीं, ऐसे नहीं नहीं. हो सकता. केवल एक ये रिजल्ट हो तो मान सकता हूं मैं. इतना सा है तो ठीक है, बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तब नहीं कह सकते आप. तब तो Okay, sir. कुछ कैंसिल होके रिजल्ट देंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. NP4 is 20 times NP2. Find n. NP4 is 20 times NP2. Find what is n. NP4 is 20 times NP2. Find what should be n. So 7. Check please. Factorial n by factorial n minus 4. 20 times factorial n by factorial n minus 2. These two get cancelled out. N minus 2 is bigger, n minus 4 is smaller, so keep n minus 4 as it is.
20 times. This will be coming n minus 2, n minus 3 factorial n minus 4. This part clearly gets it out. Then I got it n minus 2 into n minus 3 comes out to be 20. 20 को क्या लिखेंगे? 5 into 4. Consecutive one, greater first, second greater. So that means n minus 2 is coming 5. So n comes out to be 7. सर Yes. सर अभी जैसे ये नहीं आया था कि 20 को 5 into 4 लिखना तो फिर वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी। तो क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हो आप। सर Yes, sir. 17 के ऐसे फैक्टर 17 के फैक्टर आ रहे थे। क्वाड्रेटिक से कर लेते हैं लोग, बट क्वाड्रेटिक अवॉइड करो आप क्योंकि नेचुरल नंबर्स आपको दिख रहे हैं। n स्क्वायर माइनस कितना आएगा? 5n प्लस 6 माइनस 20 कम्स आउट टू बी 0। सर 6 है, ओके सॉरी सर। माइनस, हाँ सर सर 14 आएगा। 7 and 2 हाँ सर हो जाएगा 7 और 2। 2। One is n plus 2, another is n minus 7. n minus 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि n is a natural number, केवल n 7 रह जाएगा। Next question please.